J'ai marché seul avec mon éléphant pendant des jours. Je ne savais pas où j'étais. Il n'y avait pas un seul arbre et à peine un peu d'eau à boire. Rien ne m'avait préparé à cela. C'était la première fois que j'ai quitté mon village et la forêt. Je ne savais pas que le monde extérieur était si différent et que le monde de mon enfance ne durerait pas toujours. 1960년대 인도 카르나타카주 사크레바일. 마크볼은 대대로 코끼리를 다루어 온 마우트 집안의 아이로 태어나게 되었죠. Mon père et mon grand-père, avant lui, travaillaient pour le département des forêts avec les éléphants du gouvernement. Les éléphants ont toujours fait partie de la famille. Ce sont eux qui nous ont nourris et qui nous ont apporté un peu de respect. 망설! 망설! 12살이 된 마크볼은 병상에 계신 할머니를 돌보는 착한 아이로 자라나는데 녀석이 가장 되고 싶었던 사람은 코끼리와 함께 살아가는 마우트였습니다. À l'aube, les hommes lavaient les éléphants à la rivière et partaient travailler dans la forêt. J'ai appris très tôt à retrouver leurs traces et j'aurais fait n'importe quoi pour pouvoir les accompagner. مقبول رجع. La première chose que j'avais vue du monde, c'était les éléphants. Et leur odeur, je l'avais dans la peau. 마크볼은 재빨리 나무 위로 피신하고 녀석을 발견한 코끼리는 무섭게 다가왔죠. 한참 뒤 마을 사람들이 마크볼을 찾으러 왔습니다. 같이! 같이 가요! 때때로 야생 코끼리는 아주 위험한 존재였습니다. Hey, مقبول hey. سلوي ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸಮೀದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ನೋಡಿ ಬಾಳೆ ಹೋಗಿದೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. Tous n'avaient pas eu ma chance. Après ma rencontre avec l'éléphant sauvage, tout le village disait que sans aucun doute, je deviendrais un maroute. 마크볼은 학교 공부에 관심이 없었고 오로지 코끼리에만 관심이 있었는데
어머니는 그런 아들의 모습을 너무나도 싫어하셨죠. Au contraire de ma mère, ma grand-mère savait depuis mon premier cri ce que serait mon métier. उसके बाद तुम्हें साथ में लेकर जंगल को क्या ये बच्चे से बेजार हो गए हमें तो उसके मेरे साथ लेको मैं जंगल में रहता हूँ हाँ इसे बहुत ले जाकर वहाँ काम करेंगे मकबूल अरे बोल का बेटा क्या करती बोलो बा जमेदारा का किस्सा C'est mon père qui m'a appris à vivre dans la forêt. Et c'est la forêt qui m'a appris à connaître mon père. Les hommes laissaient les éléphants paître librement dans la forêt. Aussi, la première tâche du jour était de les retrouver et de les préparer au travail. चल माल कहा नहीं जेब को ऊपर पकड़ मार
하지만 얼마 후 아버지의 건강은 급격히 나빠지게 됩니다. ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ. ले अकेला कह जा 마크블은 오랜 시간이 걸려서 코끼리를 길들이는 데 성공했죠. 아버지는 아들의 자랑스러운 모습을 보며 미소를 지었습니다. Je me suis retrouvé chef de famille, mais encore trop jeune pour être engagé au département des forêts. Tout ce qu'il nous restait de mon père, c'était une petite pension du gouvernement. Pendant 3 ans, j'ai dû travailler en ville pour aider ma famille. J'ai même essayé d'oublier les éléphants. क्या कर रही हो? अभी काम नहीं छूटा क्या? पानी पी लिया? 하지만 그녀는 나오지 않았고 마크블은 다시 고향으로 돌아갑니다. 그리고 다시 코끼리와 함께하게 되죠.
Salut. Quand j'ai pu officiellement devenir Amaout, il ne restait que 2 éléphants au village. L'exploitation forestière avait cessé. Tout ce qui nous restait, c'était l'entretien des pistes existantes. Quand il a fallu que je me marie, j'ai encore suivi la tradition et ma mère a trouvé une fille bien pour m'épouser. Très vite, elle est tombée enceinte, mais mon travail dans la forêt me tenait loin de la maison. मकबूल जल्दी आ अर्जेंट है जल्दी आ मकबूल 하지만 급격한 산업화로 인해 전통은 빠르게 사라져가고 있었습니다. Puis le gouvernement a décidé de vendre mon éléphant. Personne, pas même l'officier des forêts, n'aurait pu s'y opposer. जल्दी 1990년대 인도는 경제 자유화로 시장을 개방했습니다. 그리고 본격적인 기계화가 시작되면서 벌목과 운송에서 코끼리의 역할은 급격히 줄어들었고 마우트와 코끼리는 산업 논리에서 완전히 밀려나게 되었죠. Nous, Maout, faisons une grave erreur de dire « c'est mon éléphant ». On oublie trop souvent qu'il ne nous appartient pas. J'ai reçu l'ordre du département des forêts d'accompagner mon éléphant chez son nouveau propriétaire. பதிப்போத்த கைகூடும் நிர்மலதருள் கண்ட சக்தி ரவமரந்த மரணடி நெஞ்சே நோக்க சரவண பவன
J'avais entendu parler de cette foire aux animaux, la foire de Sonnepour, où même des éléphants sont vendus. J'ai aussitôt compris que l'acheteur avait trompé le département des forêts. Il avait obtenu l'éléphant à bas prix seulement pour le revendre plus cher à quelqu'un d'autre. 하지만 그가 할 수 있는 일은 아무것도 없었고 이런 안타까운 상황에 처한 것은 마크불 뿐이 아니었습니다. दिन रात रहता नहीं ऐसा नहीं क्यों बोलो आप भी बहुत सुंदर है कभी छठे छम आए नहीं सनम ये मेरा हाथी है 모처럼 도시에 오게 된 그는 구경에 나섰고 아내에게 선물해줄 팔찌도 고르게 되었죠. Il n'a pas mis longtemps à trouver un acquéreur. Ils ont convenu d'un prix par signe des mains sous une serviette. Et je n'ai jamais su combien il a revendu mon éléphant. Tout mon travail, toutes ces années passées avec lui dans la forêt, ne changeait rien. प्लीज बस अब इनकार मत कीजिए प्लीज. 그렇게 코끼리는 팔리게 되었고 마크불은 그 모습을 힘없이 바라볼 뿐이었죠. 마크불은 안 좋은 예감에 트럭에서 내리고 다시 코끼리를 찾기 위해 왔던 길로 되돌아갑니다. ఇక్కడ బాబు ఇక్కడ అది ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಬು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಈ ಕಡೆ ಬಾಬು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಿದೆ पुराना माहौल आया लेने के लिए हाथी ले जाओ तुमने. 그렇게 코끼리와 마크불은 다시 함께하게 되었습니다. ಯಾರಿವಳು ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಂದದ ಊರು ಚಂದದ ಕಾಡು.
मैंने तुम्हें सब बातें बता दी। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं अपने हाथी के साथ यहाँ नहीं रह सकता? मैं तेरी परेशानी अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन क्या तेरे लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि तू अपने गांव वापस चला जाए? चुनाचे भला हाथी रहे तो कहाँ रहे? मुझे ये चिंता सता रही है कि मेरे बाद मेरे हाथी का क्या होगा। पर ये तो सच है कि तेरे हाथी की उम्र तुझसे ज्यादा लंबी होगी, लेकिन तू इतना तो कर ही सकता है कि जो खुद तेरे बाप ने तुझे सिखाया है वो तू किसी और को सौंप जाए। 인샬라. 마크불은 그날 밤 꿈에서 노인이 된 자신의 모습을 보게 됩니다. 그리고 그날이 올 때까지 코끼리와 함께하게 될 것이란 걸 깨닫게 되었죠. 영화 하티였습니다.